Chaya, Shishi, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Nanda Kota Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Premse Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Ki, Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Ki Jai. Navadvitam ki jai, Gangamai ki jai, Jamuna ki jai, Tulasi Devi ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada's book distribution ki jai, Nitai Gaur Pramanandi. All glories to the devotees, all glories to the Lord. Yeah, if you recite the district, you can do that too. Hare Krishna. 46? 46. Marked 44. 46. Okay, perfect, thank you. तो अभी आपके मेरे पीछे पढ़ेंगे स्वयं एव ब्राह्मणं भुङ्क्ते स्वयं वस्ते स्वं ददाति च तस्य एव अनुग्रहेण अन्नं भुङ्क्ते क्षत्रिय आद्य स्वयंवस्ते स्वं ददाति च तस्य एव अनुग्रहेण भुञ्जते क्षत्रिय आद्य स्वयमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वयंवस्ते स्वयं ददाति च तस्य एव अनुग्रहेण अन्नं भुञ्जते क्षत्रिय आद्य स्वयमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते संवस्ते संददाति च तस्यानुग्रहेणानन्दं भुञ्जते क्षत्रियादयः स्वयमेव ब्रह्मणो भुङ्क्ते स्वस्तेव ददाति च सेवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते संवस्ते ददाति च तस्यानुग्रहेणान्नं स्वयं ददाति च तस्यानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते ब्राह्मण भुङ्क्ते भोगता है स्वयं अपना वस्ते पहनता है स्वयं अपना ददाति भुञ्जते खाता है क्षत्रिय आदि समाज के अन्य वर्ण
शुद्ध क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय शब्दों से की जाती है, जिससे सूचित होता है कि परमेश्वर ब्राह्मणों को पूज्य देव मानते हैं। परमेश्वर सबों द्वारा पूज्य है, किंतु अन्यों को शिक्षा देने के लिए वे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान को सारे संसार में प्रसारित करना है। जबकि वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्राह्मणों का अभाव होता है, तो मानव समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव भगवान के प्रत्यक्ष सेवक दास होते हैं, अतः वे अन्य पर आश्रित नहीं रहते। वास्तव में संसार की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों की है, किंतु वे विनयवश क्षत्रियों या राजाओं तथा वैश्यों या व्यापारियों से दान ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मणों की है, किंतु क्षत्रिय सरकार तथा व्यापारी वर्गों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को बैंकरों की भांति अपनी अमानत में रखे, और जब भी ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता पड़े तो क्षत्रिय तथा वैश्य तुरंत उसकी पूर्ति करे। यह बचत खाते की भांति है, जिसका जमा करता इच्छा अपना धन निकाल सकता है। भगवान की सेवा में रत रहने के कारण ब्राह्मणों के पास इतना समय नहीं है कि संसार भर की अर्थव्यवस्था को संभाले, अतः सारी पूंजी क्षत्रियों या राजाओं द्वारा रखी जाती है, जो ब्राह्मणों के मामले पर उस पूंजी को प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ब्राह्मण या वैष्णव प्राय खर्चे पर जीवन यापन नहीं करते, वे अपना खर्चा करते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे धन को अन्य से एकत्र कर रहे हैं। क्षत्रियों तथा वैश्यों को दान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी रहता है ब्राह्मणों का होता है। अतः केवल ब्राह्मणों के आदेश पर ही क्षत्रिय तथा वैश्य दान दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय ब्राह्मणों का अभाव है, और चूंकि तथाकथित क्षत्रिय तथा वैश्य ब्राह्मणों के आदेशों का पालन नहीं करते, फलस्वरूप संसार में अराजकता फैली हुई है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति संकेत करती है कि क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मणों की कृपा से ही भोजन पाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें ब्राह्मणों द्वारा वर्जित कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, और कोई ऐसी वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। वे केवल प्रसाद अर्थात भगवान को अर्पित भोजन का भोजन खाते हैं। क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों को केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, जो उन्हें ब्राह्मणों की कृपा से प्रदान किया जाता है। वे कसाई घर खोलकर मांस मछली या अंडा नहीं खा सकते, न शराब पी सकते हैं, और न बिना अनुमति के इस कार्य के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान युग में समाज का संचालन ब्राह्मणों के आदेश से नहीं होता, आदेशों से नहीं होता, अतः सारी जनता पाप कर्मों में डूबी है। फलस्वरूप सभी को प्रकृति दंडित कर रही है। कलयुग की दशा ऐसी ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवम्
Sadvaitam Sadvaitam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Tamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Navajate Takta Kanchana Korani Radhe Vrindavaneshwari Vishwavadam Sutta Devi Pranamami Hari Hari Panchakalpa Jivrischa Krita Siddhi Devicha Hati Tanam Pavadevyo Vaishnavevyo Jai Shri Prabhupada. So, this verse is an interesting verse. It's really kind of talking about the chaos in the world of Kali Yuga. तो ये बहुत ही रोचक श्लोक है और ये श्लोक वास्तव में बता रहा है कि कैसे इस संसार में अराजकता फैली हुई है. Krishna has designed a system of society so that the different parts of society can support and help one another. तो कृष्ण ने समाज की संरचना इस तरह से की है कि समाज के विभिन्न वर्ग एक दूसरे का सहयोग कर सकें. In actuality, we're all one big family. We're all parts and parcels of Krishna. वास्तव में देखा जाए तो हम एक बड़े परिवार का ही हिस्सा हैं. हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं. And we have different roles according to our consciousness. और हम सब में अपने अपने चेतने के अनुसार अलग-अलग प्रकार का रोल निभा रहे हैं. And the Varnashram Dharma, the setup is that there's Brahmanas who disseminate the highest Vedic knowledge, the knowledge of the soul and relationship. तो वर्णाश्रम इस प्रकार से एक ध्यान है जिसमें ब्राह्मण जो कि समाज को सबसे उच्चतम ज्ञान देते हैं वैदिक शास्त्रों का जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं. And then the Kshatriyas are the administrators. They manage the affairs of the different organizations and kingdoms. और जो क्षत्रिय होते हैं वो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन को संभालते हैं. And the Vaishyas, they produce grains and foodstuffs and different products that the different ashrams can use. और जो वैश्य होते हैं वो अलग-अलग प्रकार का उत्पादन करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं जो अलग-अलग आश्रम के लोग उसका उपभोग कर सकें. And the Sudras are the support system. They support and serve the other ashrams. और जो शूद्र होते हैं वो बाकी तीनों आश्रम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होते हैं और वो तीनों आश्रम की सेवा करते हैं. These four parts are all essential in an efficient functioning of society. और ये चारों ही भाग महत्वपूर्ण हैं अगर हम सुचारू रूप से समाज को चलाना चाहते हैं. In the current age, there's not very many brahmanas, as Prabhupada explains in the Prabhupada. इस युग में बहुत सारे ब्राह्मण नहीं जैसा प्रभात तात्पर्य लिख रहे हैं. So without the higher Vedic understanding of who we are and what our purpose is, हमारे अपने ज्ञान का होना और हमारे यहाँ पर होने का ज्ञान हमारा उद्देश्य क्या उसका ज्ञान न होने के कारण we kind of run around and it's very chaotic. We kind of clash with one another. उसके कारण हम एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ते हैं और एक दूसरे से कई बार हमारी भिड़ंत भी हो जाती है. You can look at it even just simply as any system, even in a computer, any system has a certain organization. तो अगर किसी भी सिस्टम को ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रबंधन होता है. Even the body has a certain organization. शरीर को भी देखें तो इसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. The brain is the central control tower. जो दिमाग है वो एक केंद्रीय कंट्रोलर है. And the arms of the Kshatriya that protect and defend. तो जो भुजाएं हैं वो हम क्षत्रिय की तरह
रक्षा करती है, बचाव करती है और बाकी बताएं इस तरह से अलग अलग जब भी अटैक होता है तो सबसे पहले हाथ ही आगे आता है। That's the Vaishna's stomach. The Vaishna is the stomach which provides, nurtures, and digests the food to give energy to the rest of the system. और जो वैष्णव है वो पेट के समान होते हैं जो कि पूरे समाज को बाकी पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। And the legs are the sutras which carry the rest of the parts around to the different places. और जो टांगें होती हैं वो शुक्र की तरह जो बाकी पूरे शरीर को अलग अलग जगह लेके जाती हैं। So all of these parts are meant to work in cooperation and in an integrated way, so it seems seamless. तो ये सारे जो अंग हैं ये सब एक दूसरे से आपसी सहयोग और आपसी मेलजोल के साथ ही आगे कार्य करते हैं। So in our body, it seems a little bit more seamless that they're all integrated and part of one system. तो जब एक शरीर को रूप में देखते हैं तो ये हमें एक ही इकाई नजर आते हैं और ये एक ही एकत्रित व्यवस्था है। This is the microcosm of society, the body. तो ये एक समाज का जो शरीर है ये एक समाज का एक छोटा उदाहरण है, छोटी इकाई कह सकते हैं। In the macrocosm, in the society in general, it's a little harder to see the integration. तो जो बड़े रूप में इसको देखें तो समाज के रूप में इसमें थोड़ा जो एकीकरण है थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। Especially if there's not much head power. खास तौर पर जब ज्यादा जो दिमाग में वो ना हो, मतलब प्राणा ना हो। Just imagine, if we don't have a lot of brain power or head power, we're disabled. We're not functioning at our highest potential. तो जब हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ये जो दिमाग की पावर नहीं होती, दिमाग की शक्ति नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, तो हम अपनी जो उन्नत अवस्था है, अपना उन्नत सामर्थ्य उस पर कार्य नहीं कर पाते। We might say we're a bit handicapped. और हम कह सकते हैं कि हम विकलांग हो जाते हैं। This is the condition of Kali Yuga. और यही कलयुग के अंदर स्थिति है। We're handicapped. हम लोग अपाहिज हैं। Now, the different parts, again, of society are meant for the efficiency of the society in general. तो जो अलग-अलग भाग हैं वो समाज के सुचारू की जो गुणवत्ता है उसकी जो स्पीड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। And here in the verse it says that the Supreme Personality of Godhead, he worships the Brahmins who represent the head. तो इस श्लोक में बताया गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्राह्मणों की पूजा करते हैं जो कि मस्तिष्क के समान है। And he worships the Brahmin because they are most dear to him, just like in Bhagavad Gita it says, one who disseminates this Vedic knowledge to others is most dear to me. I don't know the verse. तो भगवान ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और भगवान को बहुत ही प्रिय है क्योंकि जैसा भगवान गीता में बताते हैं कि जो भगवत ज्ञान को आगे बढ़ता है वो मुझे सबसे प्रिय है। So out of affection that the Brahmanas are there to help the other parts to elevate their consciousness to come back to Krishna. Krishna loves all his parts and parcels, so he's grateful to the Brahmanas for helping all the other parts. जो ब्राह्मण वो बाकी सारे अंगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी चेतना का विकसित करके कृष्ण की ओर आगे हैं और क्योंकि बाकी सारे अंग भी कृष्ण का अंश है तो इसलिए कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति बड़े कृतज्ञ होते हैं क्योंकि वो उनको प्रोत्साहित करते चेतना विकसित में। That is the role of the Brahmanas, and it's a very important role. और ये ब्राह्मणों का समाज में कर्तव्य है और ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। Now, in the rest of the verse, it says that actually everything belongs to the Brahmanas, and so the other parts are meant to supply whatever the Brahmanas need at request, because everything belongs to the Brahmanas.
तो बाकी इस तात्पर्य के बाकी भाग में बताया गया है कि सारी चीज भ्रमणों की है और बाकी सारे विभिन्न अंगों को जब भी भ्रमण में जरूरत हो उनकी आवश्यकता अनुसार वो चीजें दे देनी चाहिए क्योंकि वो उनका भगवान की सेवा लगा सकते। And the reason it says this is because the Brahmanas are the representatives of the Supreme Lord. और इसका कारण ये क्योंकि ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि हैं। In actuality, everything belongs to the Supreme Lord, and the Brahmanas are representing the Supreme Lord. वास्तविक रूप में देखा जाए तो सब चीज भगवान की है और जो ब्राह्मण है वो भगवान के प्रतिनिधि है। Now, if the Brahmana thinks that I'm the Supreme Lord, and so everything belongs to me, this may cause some misunderstandings within the society. और अगर ब्राह्मण ये सोचने लग जाए कि हम ही पुरुषोत्तम भगवान है और सारी चीजें हमारी हैं, तो इससे समाज की जो व्यवस्था है में सुचारू नहीं रह जाती। So let's go to the body again. So the head is the Brahmana. तो शरीर पे चलते हैं, जो हमारा मस्तक है, जो सर है, वो किसके समान है? ब्राह्मण के समान। So there's two parts of the head. There's the brain, which is meant for the survival of the body. तो इस सर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है दिमाग, जो कि हमारे शरीर के जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। There's also a mind, which is more subtle, which may misinterpret the information coming to the brain. और एक होता है मन, जो कि हमारे जो दिमाग को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, उसको misinterpret भी कर सकता है। So let's give an example. Say there's getting a signal that there's a pain in my leg. The signal. मान लेते हैं कि हमारे पैर में दर्द है। Now, if the mind says, "I'm not my body," I'm going to disregard that signal. The functioning of the whole body may not happen properly. तो अगर जो हमारा मन है वो ये कहे कि मैं शरीर नहीं हूँ और ऐसी सूचना देता है, तो हमारे जो शरीर का जो सुचारू व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। So here this verse is talking about pure Brahmanas, pure Vaishnavas. इस तात्पर्य में जो शुद्ध ब्राह्मणों के बारे में बात की गई। They're not in the mental misinterpretation that when they read this verse, they're not in the interpretation that I'm Brahmana and everything belongs to me and you should serve me. They're not in that mentality. तो इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण ये सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और सब कुछ मेरी सेवा में लगना चाहिए। They're actually in the mentality that I am a servant of the Supreme Lord. ब्राह्मणों की मानसिकता होती है कि मैं परम भगवान का सेवक हूँ। You are all parts and parcels of the Supreme Lord. और बाकी सब भी भगवान में ही अंश है। And my service is to remind you of your relationship with the Supreme Lord. That's my service. और मेरी सेवा ये है कि मैं आप सबको याद दिला पाऊँ कि आप भगवान के अंश हैं। And that's a very important service. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। So the Brahmanas are acting in complete connection, seeing all the parts as parts of the whole society. They see everything connected. तो ब्राह्मण जो होते हैं वो देखते हैं कि जो बाकी सारे हिस्से हैं समाज के, वो सब आपस में पारस्परिक रूप से जुड़े हुए और एक ही सिस्टम का भाग है। They're seeing from the soul level. वो आत्मा के स्तर पर देखते हैं। They're not seeing from a material hierarchical level. वो भौतिक ऊंच नीच के स्तर के अनुसार नहीं देखते हैं। The brain is not thinking, I am the best, and I don't need the other parts really.
I don't need the other parts. तो मस्तक ये भी सोचता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझे दूसरे हिस्सों की जरूरत नहीं है। The integrated head is thinking, I'm so grateful for my arms, I'm so grateful for my stomach, I'm so grateful for my legs. जो कि मस्तिष्क इंटीग्रेटेड है वो ये सोचता है कि मैं अपने भुजाओं के प्रति बड़ा ही कृतज्ञ हूँ, अपनी टांगों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। There's a true appreciation of all the parts. वो बाकी हिस्सों का वास्तविक गुणगान करता है। This is the mentality of a Vaishnava. ये वैष्णव की मानसिकता होती है। Now, sometimes within the material world, things get a little misconstrued. पर कई बार जो कि भौतिक जगत में जो चीजें कुछ कई बार मिसकंसर्न होती है, And so we have more of a hierarchy of, I'm a Brahmana, I'm better, and you're this or that, and you're lower than me, and you need to serve me. और कई बार उस कारण से ऐसा सोचा जाता है कि ब्राह्मण सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम मुझसे नीचे हो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और तुम्हारा कर्तव्य है मेरी सेवा करना। With that mentality, which is the mentality within the so-called Brahmanas and Kshatriyas in Kali Yuga, with that mentality, there's a lot of discord and conflict. तो इस मानसिकता के कारण ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में बहुत ज्यादा एकता नहीं रहती, वो अलग हो जाते हैं। It also says in the verse that a Brahmana is not dependent on anyone. और इस श्लोक में बताया गया है कि ब्राह्मण किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। It seems a little contradictory because here it says the Brahmana is being supported by everyone, and yet he's not dependent on it. तो ये थोड़ा सा विरोधाभास करता है क्योंकि बताया गया है कि ब्राह्मणों बाकी सारे वर्गों के द्वारा सपोर्ट मिलता है और यहाँ बताया गया कि वो किसी पे निर्भर भी नहीं होते। Because this is not a material support system. क्योंकि ये भौतिक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। It's more like the Brahmana is providing loving encouragement and care for the others, and they naturally want to reciprocate. तो ब्राह्मणों का जो होता है कि वो प्रेम, स्नेह और ध्यान रखने की प्रवृत्ति होती है दूसरे वर्गों के प्रति और वो स्वतः ही उनकी सेवा करते रहते हैं। And as the other parts support the Brahmana is also very grateful. और जो बाकी जो वर्ग होते हैं जो ब्राह्मणों को सपोर्ट करते हैं तो ब्राह्मण भी बदले में बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। So when we take these systems that Krishna has created out of context, they become materially infected and perverted. तो जब हम जो कृष्ण के द्वारा दिया गया विधि है, व्यवस्था है, उसको संदर्भ से बाहर देखते हैं तो ये जो व्यवस्था है ये सुचारू नहीं रहती, इसमें एक तरह से गड़बड़ हो जाती है। This creates chaos. ये अराजकता फैला देती है। So now let's go back to the body again and look at the body. Go ahead. हम दोबारा से शरीर में चलते और देखते हैं। So if the mind misuses the different parts of the body by pushing them more than they can be pushed. तो जब मन शरीर के दूसरे अंगों को एक जगह से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो It can create chaos for the whole body. उससे पूरे शरीर में chaotic हो जाता है, समस्या आ जाती है। Let's say the mind thinks, oh, I would like to eat all kinds of foodstuffs. उदाहरण पर देखते हैं कि मन सोचता है कि मैं हर प्रकार का खाना खाना चाहता हूँ। And as long as it's prashadam, it's good. और जहाँ तक अगर ये प्रसाद में तो ये सब चलेगा। But it eats
too much. It eats foods that really are hard to digest. And the stomach starts to suffer. और वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और ऐसा खा लेता है जो कि पचाने का बहुत मुश्किल है, जिसके कारण पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। So then when the stomach starts to suffer, all the rest of the body also has the repercussions. It's not getting the nutrition, and then the energy meant to do other things now has to go to deal with this upset. तो जब पेट में कष्ट होता है तो पूरे शरीर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो बाकी हिस्से उनको पोषण प्राप्त नहीं होता है और जो शक्ति दूसरे कार्यों में लगती थी वो अब पेट के अंदर जो कष्ट है उसके निवारण में लग जाती है। And that's why the science that's given to us in Srimad Bhagavatam is very deep. इसलिए जो श्रीमद् भागवतम में हमें विज्ञान देकर बहुत ही गहरा है। It's not just an external hierarchical structure. ये कोई बाह्य एक विधिकर व्यवस्था नहीं है। When we take the heart and the care with which Krishna created the system, when we take the love out of the system, it becomes a hard system of rules and regulations, higher and lower. और जब इस व्यवस्था के अंदर से हृदय को निकाल देते हैं और भगवान कृष्ण के प्रेम को निकाल देते हैं तो ये सारी व्यवस्था बहुत ही कठोर नजर आती है, जिसमें नियमावली लगी हुई है और नियमावली लगी हुई है। Without the love and the respect of the different parts of the system, there will be frustration and chaos and pain. तो अगर हम भगवान का प्रेम और भगवान की करुणा को निकाल दें और उनका केयर को निकाल दें उस व्यवस्था के अंदर से वर्णाश्रम की, तो ये सारा का सारा बहुत ही chaotic हो जाएगा और इसके अंदर बहुत ही प्रेम कष्ट रहेगा। We can't take the heart and the love out of any system without having serious consequences. हम किसी भी व्यवस्था से उसका हृदय और उसकी जो दया की भावना को नहीं निकाल सकते बिना अराजकता फैलाए हुए। Sometimes as devotees, we tell ourselves, I'm not this body. कई बार भक्त अपने आप को कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। And we therefore neglect some of the parts of the body. और उसके कारण हम अपने शरीर के कुछ हिस्सों का निग्लेक्ट करना शुरू कर दें, उसको अवहेलना शुरू कर दें। We work from our head, but we don't include the consciousness of our heart. हम अपने दिमाग से काम करते हैं लेकिन अपने जो हृदय की चेतना है उसको सम्मिलित नहीं करते। So consciousness and Krishna consciousness is not just a head theoretical process. कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जो चेतना है, चेतना सिर्फ दिमाग का ही भाग नहीं है। Bhakti is loving devotion. It involves the heart. भक्ति एक प्रेम में भेद है जिसमें हृदय का उपयोग होता है। And that is the true source of our joy and our nurturance, that we have the mood of love. जो कि वास्तव में हमारे आनंद और हमारी खुशी का स्रोत है। So in the Varnashram Dharma, the system that works is when the Brahmanas and the Kshatriyas are really working truly in service to the Supreme in all his parts and parcels. तो वर्णाश्रम का जो व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चल पाती है जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिलकर भगवान की सेवा के लिए एक साथ लगते हैं। They're serving in love and joy and care and compassion for all the parts. तो जब वो भगवान की सेवा करते हैं
दया के साथ और सेवा की भावना से। And then those parts that are receiving the love naturally want to reciprocate by serving. और फिर उन वर्गों को स्वतः ही प्रेम प्राप्त होता है क्योंकि जो भी उनकी किए हुए बदले में मिलता है। And that service then elevates the consciousness of the other parts of society. That और इस सेवा service से elevates the और इस consciousness. सेवा से जो बाकी भाग है उन सब की चेतना का भी विकास होता है। So I wanted to leave a little time for some questions. ओके, अभी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम रखा होगा। Or comments or Or is it not- corrections. कोई कमेंट कोई करेक्शन हो? There's one back Yes, there, question. please. Hare Krishna Maharaj. Haribo. Yeah, Can you speak loud so that everybody can hear you? my question is, Mataji, like there's one ashram and there is one ashram, right? So, and both have the object of serving and pleasing the Supreme Lord. Uh-huh. So, what is the difference between the two ashrams? तो प्रभु जी का प्रश्न है वर्णाश्रम और दैनिक वर्णाश्रम अगर दोनों में भगवान की सेवा आई हुई है तो दोनों के अंदर भेद क्या है? सो बेसिकली वर्णाश्रम और दैनिक वर्णाश्रम में भेद क्या है? What's the difference between वर्णाश्रम? Can you help me understand the question? Yeah, he's asking what's the difference between the Varnashram and the Varnashram as both are meant for serving the Supreme Lord. Varnashram and Daiva Vashram. Then Varnashram. I may not know that answer. Okay. So So you explain it and then maybe I'll extrapolate on what you explain. okay. So प्रभु का प्रश्न है वर्णाश्रम और दैनिक वर्णाश्रम में क्या भेद होता है? तो मैं प्रयास करता हूँ माता जी ने सेवा दिया है। तो वर्णाश्रम बेसिकली जो वर्णाश्रम में जो चारों वर्ण चारों आश्रम अपने अपने हिसाब से कार्य करते जो उनके नियम है और उसमें भगवान का इतना मतलब they are not working for Supreme Lord, like they follow the Brahmana do their duty, the Kshatriya perform their duties and the Vaishya and Shudra they work in a system. और जब इस सिस्टम के बीच में आप भगवान को ला देते हो दैनिक वर्णाश्रम. So I explained the Varnashram is like the Brahmanas, they are doing their duties, the Kshatriyas and the Vaishyas and the Shudras, so they are making a system. And when the system includes the Supreme Lord, then it becomes a Daivi. Otherwise it is a Varnashram. Yeah, okay. So one is an external system that, you've got the hierarchy, one's a hierarchy, and so it's like, and the other one has the heart. Daivi, it has Krishna, the heart, who loves us all and wants us to come back. So what is the कि वर्णाश्रम हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक तरह से ये हायरार्की एक चार लेवल के सिस्टम है लेकिन जब इसके बीच में हृदय को ला देते हैं भगवान को ला देते हैं जो कि हृदय के समान है तो ये कंप्लीट होता है दैनिक वर्णाश्रम हो जाता है. Yeah, and you want to understand too that Lord Chaitanya said, I am not a Brahmana, I am not a Kshatriya, I am not a sannyas. I am simply das, anudas. That mood of loving service and care and compassion for one another, without that, any system will be a material system and it will break down. तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र और तो जब हम आत्मा को देखते हैं और जब उसके बीच में हम जब हृदय को लाते हैं जब कृष्ण को लाते हैं तभी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है. अगर हम हृदय को निकाल देते हैं तो वो फॉल डाउन हो जाएगी उसका क्षति हो जाएगा. A spiritual system has to have that spirit of love and care. Otherwise, it's just a material system that will deteriorate. एक आध्यात्मिक व्यवस्था में निश्चित रूप से हृदय और जो केयर की भावना होनी चाहिए अदरवाइज वो एक भौतिक स्तर पर रह जाता है. The brain may be the controller, but without the heart, without. तो जो दिमाग है निश्चित मस्तिष्क जो है निश्चित रूप से हमारी पूरी जो शरीर को कंट्रोल करता है लेकिन अगर हृदय हटा दिया जाए तो वो शरीर खत्म हो जाएगा. Does that answer your question? Thank you. Any other questions? Yes, from here. Okay, please. Thank you, Mataji.
Hare Krishna. अभी जैसे कलयुग में दो स्टेटमेंट है, जैसे नमो ब्राह्मण देवाय दो वो ब्राह्मण इतना ऐसा, एक तरफ तो ब्राह्मण की इतने यशो गान है और दूसरी तरफ भविष्य पुराण में वर्णन करता है कि जो ब्राह्मण है कलयुग में असुर बन के आएंगे। तो उस मिसयूज करके जनता ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज भी करती है और एक तरफ ब्राह्मणों को ग्लोरिफिकेशन भी है। तो दोनों स्थिति में कैसे साफ एक जो कॉमन मैन है वो जस्टिफाई करेगा पूजनीय है या असुर है? So Prabhuji has a question that the scripture says Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitacha. So the Brahmana Devaya, the Brahmanas are worshipable. Yes. And the other part in the Puranas it is written that in Kali Yuga the Brahmanas will appear as a demon. As a demon? Demon. Uh-huh. And thus so a common man, how will he consider both the statements? Like if he consider them as a Brahmana Devaya, he will obviously glorify and respect them and worship them. And the other statement, he criticizes them, so he will be away from them. So how a common man will reconcile both the statement and how he sees the Brahmanas properly? In the material world, things become perverted, and so both those aspects are there. A true Brahmana, a true Vaishnava, actually Prabhupada used to say a Vaishnava is higher than a Brahmana. तो कलयुग के अंदर सारी चीजें विकृत रूप में पाई जाती है और प्रॉपर कहते हैं कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से ऊपर होते हैं। So a Vaishnava really is das anudas, really has that mentality. I want to serve and support the parts and parcels of Krishna that are suffering in confusion and misunderstanding. तो वैष्णव जो होते हैं वो दास के भाव में होते हैं और वो वास्तव में ये भाव रखते हैं कि जो कृष्ण के जो अंश है जो कष्ट उठा रहे हैं बिल्कुल उनकी सेवा करें। Someone born in a Brahminical family may or may not have that mentality. और अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो उसकी ऐसी मानसिकता ना हो। So if I have this, if I'm in a Brahmin family, I have a high responsibility to have the heart and consciousness of a true Brahmana. तो अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो निश्चित रूप से तो उसके अंदर ब्राह्मण का ये चेतना और हृदय होना चाहिए कि मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ, मदद कर पाऊँ। And if I don't, instead of helping others, I may actually harm them or hurt them or misuse them. और अगर मेरे अंदर ये भावना नहीं है कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी मदद करूं, तो निश्चित रूप से मैं उनको या तो उनको नुकसान पहुंचाऊंगा या कष्ट दूंगा या उनको उपभोग करूंगा। So we can tell a true Brahmana, a true Vaishnava by his heart. तो हम पहचान सकते हैं कि सच्चे ब्राह्मण को, एक सच्चे वैष्णव को उसके हृदय से, By his or her heart. उसके शुद्ध हृदय से। Does that make sense? जैसे ये तो एक डिवोशनल आंसर होगा, एक डिवोटी के लिए होगा कि उसे, पर एक कॉमन मैन जो नहीं जानता डिवोशनल को, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं इसको सर्व करूं या इसको नेग्लेक्ट करूं? So he is asking that this answer is for devotees, but a common man, a layman, how he sees the Brahmana, whether he serves them or he criticizes them. Well, जनरली क्या अभी क्रिटिसाइज हो रहा है ब्राह्मण, Because nowadays the Brahmanas are being criticized a lot. are being criticized a lot by the common man. By Even common the man. Vaishnavas are criticizing Example. No, even they're even criticizing Vaishnava Brahmanas or No, not Vaishnava. just criticizing the Brahmin class. Criticize the Brahmanas. Yeah, well, if a certain class of persons are not acting to their real, in their real responsibility, there will be criticism. तो अगर कोई वास्तव में अपने जो कर्तव्य है उस लेवल पे अगर कार्य नहीं करता तो उनको अवहेलना झेलनी पड़ती है। There will be chaos. उससे निश्चित रूप से अराजकता फैलती है। So we may not, and the other thing is the common man, and every soul is being guided by super soul. और हर कोई परमात्मा के द्वारा ही दिशा प्राप्त है।
So depending on the mentality of the person, if their concern is that the Brahmins truly represent the Lord properly, there may be some upset if there's Brahmanas that are not doing that. तो अगर वास्तव में ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो एक अच्छी तरीके से सुचारू व्यवस्था बनाए रखे, और अगर वो नहीं बनाते रखते तो निश्चित रूप से उनको अवहेलना झेलनी पड़ेगी। So what can we do on a personal level? We really have to make sure we're taking to this path. So it's in order to properly represent Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's movement. What is my mentality? How am I properly representing the Vaishnava? How am I properly, having the consciousness of a Vaishnava? Where am I being conscious and where am I being neglectful? If we work on ourselves, then we can really help to elevate the consciousness of the whole society. और जहाँ तक प्रश्न उठता है हमारा, तो हम सबको ये देखना चाहिए कि मैं इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में हूँ, तो मैं श्रील प्रभुपाद को एक सुचारू रूप से उनको रिप्रेजेंट करूँ, और देखना चाहिए कि कहाँ मैं कृष्ण भावना भावित को जो कि वैष्णव से अपेक्षा की जाती है उस तरह से व्यवहार कर पा रहा हूँ, कहाँ पर मेरे अंदर की कमी है, ताकि मैं उससे ऊपर उठ के अपने एक कृष्ण भावना प्रभाव को अच्छे से प्रतिनिधित्व कर पाएगा। I hope I answered your question. It's okay? You said okay? Yes. It's 9 o'clock. I know that people have services and maybe jobs and things. I don't want to take too much of your time. If there's any burning question, you can come ask me afterwards. Okay. तो माता जी कह रहे हैं अभी 9 बज गए, समय हो गया है, तो हम यहीं पर विराम देंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो तो माता से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भागवतम की जय, हरे शुक्वाहा माता जी की जय, और All the assembled devotees की जय।